Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we are doing the chapter. Okay, this one that is aggregate demand and related concepts, and we have completed till consumption function. Okay, now today we are going to discuss about the saving function. As in consumption function, we just come to know the relationship of the income with the consumption. It means how much from the income we consumed. Okay, so similarly, how much from the income we earn. Okay, we saved. कितना हम सेव करते हैं फॉर एग्जाम्पल माई इनकम इज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज ओके एंड आई सेव्ड अराउंड 20 रुपीज दैट मीन्स 80 रुपीज आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड ओके so that means that is it refers to the functional relationship between saving and national income. So S is here stands for the saving, and it is a functional relationship with the national income, okay, or income. So saving here I have written all the how it denotes. It shows the saving of the households at a given level of income during a given period of time. Now, with the help of this schedule here, now what we can do, same pattern or same numbers or same table for income we are using in the whole chapter. Okay, and same for the consumption. Now, जैसे हमने आपको लिया था, income is 0, 100 and so on till 600. Now, consumption as we have taken around 40 starting होती है, चाहे हमारी income 0 हो, but still we consume. Okay, so ये आपका C bar से भी denote करता है, that is ओके कंजम्पशन आपका ये आता है सी बार से 40 वाला डिनोट करेगा ना ऑटोनोमस कंजम्पशन है देन 120 देन प्लस 80 80 एंड सो ऑन ओके नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेविंग व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन गिवन सो वी नो हियर वी नो इट वेरी वेल कि जितनी भी हमारी इनकम होती है उसमें से जब कंजम्पशन हट जाता है Y is for income, okay, national income, and C stands for consumption. तो जब इनकम में से मैं अपना कंजम्पशन या कंज्यूम जितना भी मैंने किया है अमाउंट वो जब मैं हटा दूंगी देन व्हाट इज लेफ्ट दैट इज द सेविंग. यही होता है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यूर माई इनकम इज 100 रुपीज ओके और मैंने कंज्यूम कितना कर लिया फॉर एग्जाम्पल 80 तो कितना लेफ्ट हुआ मेरे पास 20 तो 20 आई एम गोइंग टू सेव. This is the saving. Similarly here यहाँ पे income क्या है 0 है but here consumption is 40 that means negative में आपकी saving हो गई. Okay, then 100 आपकी income थी 120 consumption है again consumption is more than income so it is a negative. तो negative में क्या होता है dis saving आ जाता है. It is a situation of dis saving. Here you can see. Okay, तो ये जो है आपका autonomous consumption and dis saving is there. Okay, in the negative portion. Now as the income and consumption is equal, okay, y is equals to c, then saving here is equals to 0. Why? Because whatever the income was there, it is totally or entire income is consumed. इसको मैंने सब यूज कर लिया 200 रुपए मैंने अर्न करे और 200 रुपए मैंने पूरे खर्च कर दिए सेविंग 0 हो गई. सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट हियर. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर आपका जो है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू और यू कैन से सेविंग income is equals to consumption. Okay, so this is the break even point where saving is equals to 0. So this point is this that is saving is 0. Okay, now with the help of the table also we again just try to explain. I'm just going to explain this diagram. Then as the income increases, यहाँ पे income क्या हो रही है देखिए आपकी increase कर रही है. Similarly आपका saving भी increase कर रहा है 20 40 60 80. Okay, because income minus consumption equals to saving. Okay, so here you are going to say the positive saving. यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग हो रही दैट मीन्स आफ्टर दिस वन ब्रेक इवन पॉइंट. ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका ये पोर्शन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट where savings equals to 0, that is the break even point here. So after break even point you can say the saving starts increasing 20 40 60 and so on with the increase in income. So this part is known as the positive saving and this is the negative saving. यहाँ पे क्या है नेगेटिव है सेविंग आपकी. ये जो पोर्शन है दिस इज द डिस सेविंग बिकॉज हियर द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर. ओके, नाउ वी कैन जस्ट वेरी क्विकली जस्ट रीड द यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किसके लिए है. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. ओके, सो मेजरमेंट क्या है दैट इज नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस. इनकम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ओरिजिन ओके एंड एक्स. ये नेगेटिव में गया है इसलिए नीचे से कर रहे हैं राइट.
So national income is measured on the x-axis and saving is measured on the y-axis. You can see saving here and national income. Then it starts from S on the y-axis. ये S से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे S है आपका, it is minus आपका negative saving है, okay? Negative saving when national income is zero, or in other words, saving curve starts from negative axis because of positive consumption even when income is zero. यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, ये autonomous consumption है, okay? Means if there is no income, okay? इनकम क्या है आपकी, नो इनकम, स्टिल कंजम्पशन तो आपका होगा. तो दिस पार्ट इज नोन एज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये दिस सेविंग का भी पार्ट होता है, राइट? नाउ स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व यू कैन से दैट इज एस एस हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ये ऊपर जा रहा है तो दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड कहें हम उसको, और you can say the positive relationship because we can see that after break even point income is increasing with the increase in saving, okay, or saving is increasing with the increase in income. So this is a positive relationship. Then break even point kahan hoga, break even point where income is equal to consumption, okay. Then at break even point savings equals to zero as consumption is equals to income. In either ways आप कैसे भी कह सकते हैं. Then positive saving is where after BEP, break even point, after this, okay, this is the point where the saving starts, okay, or saving is positive. So with this was the propensity to save. It means propensity means ability to save, how much I am able to save from the given income, okay. So this shows the functional relationship between the national income and the saving, okay. I hope it's quite clear now. Just with the help of these explanation you can also make the table, the diagram, and it can be asked with the diagram also. MCQ diagram के थ्रू भी आ सकता है कि ये आपका डिस सेविंग कहाँ पे है, कर्व कौन सी अपवर्ड है, या आपका ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि बीईपी यहाँ पे कैसे, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू शो द बीईपी, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट in saving function, okay. So all these questions can be asked in MCQs, okay. Now let's move to the next part here. Now like consumption function, saving function is also of two types, that is average propensity to save and marginal propensity to save, okay. So first we are going to discuss the average propensity to save. Average का मतलब क्या हो गया, that is the how much I am saving, refers to a ratio of saving to the corresponding level of income, कितना हमने save करी है, right? So for example, what you can say average propensity to save, uh, just wait here, let me zoom it first. I think साफ दिख नहीं रहा होगा आपको. If saving is rupees 30, okay, at national income of 100, that means average क्या है, 30 upon 100, that means 0.30 or 30%, okay. Averages, average का APS का formula क्या है, saving upon income, okay, जितना आपने save किया है. The estimation of APS is illustrated with the help of this, okay. For example here the income मैंने उतनी ही ली है, सेविंग मैंने आपको बता दिया था पहले नेगेटिव में होती है, -40 -20, एंड देन it starts after break even point it starts to be a positive one, that is saving start हो जाती है, okay. So with the help of this relationship we can say that as the income increases APS also increases, okay. Then this is the same diagram, यहाँ पे दिखा रहे हैं average means हम कितना save कर रहे हैं to the corresponding level of income, okay. Now important points about APS, what they are saying here. APS can never be one or more than one. Okay, so APS can never be one or more than one. How you can say here? Just wait. As we know, average propensity to save is equals to S upon Y. Okay, saving upon Y, right? So what we can say here, that is they are saying APS can never be one or more than one. सो सेविंग अपॉन वाई मुझे फॉर्मूला बताया. फॉर एग्जाम्पल क्या आप सेविंग जितना भी आपकी इनकम होती है आप उतना ही सेव कर देते हैं? नॉट पॉसिबल, ओके. कि जितना भी आपकी इनकम है आपने सब सेव कर ली, यू हैव टू यूज इट फॉर द कंजम्पशन. कंजम्पशन के लिए तो मस्ट है लेना ना. सो इट इज ट्रू हियर, एपीएस कैन नेवर बी वन और can never be one or more than one, okay. Then the second point is what, APS can be zero. APS can be zero, yes. With the help of the formula we can write here APS is equals to S upon Y. We know saving upon income. So इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम 100 थी, ओके,
और हमने क्या किया, सेविंग कुछ भी नहीं करी है, all I have used for the consumption. Okay, so in this scenario we can say APS can be 0. Okay, fine. Here I'm also just giving you the example so that it can be proved. Then the next is what, APS can be negative or less than 1. तो आपने this saving का situation देख ही लिया है, ठीक है. At income level which are lower than break even point, APS can be negative as there will be dis saving. Okay, dis saving का ही यहाँ पे example आप दे सकते हैं. Then APS rises with the increased income. I have already told you that is as the income increases. This is the income part and this is APS. तो आप APS भी देख रहे हैं increase कर रहा है, right? So these are the very important points. ये MCQs में पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं. ओके, सो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए. इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला आई हैव मेक इट श्योर कि आप उसको अच्छे से समझ लें. ओके, so this was the part of APS. Now what I'm going to do, I'm going to start this marginal propensity to save. First of all, marginal का मतलब क्या होता है? With the help of here, marginal means change. ओके, जैसे हमने मार्जिनल पढ़ा था, चेंज और डेल्टा जो हम बोलते थे. ओके, एंड प्रोपेंसिटी मींस एबिलिटी, हाउ मच आई एम सेविंग फ्रॉम एक्स्ट्रा इनकम. जो एडिशनल इनकम मैंने करे है उसमें मैं एडिशनल सेव कितना हो रहा है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो एमपीएस इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, राइट? Now here what they are saying here refers to the ratio of change in saving to change in total income. For example, here this is the saving increases from 30 crores to 90 crores when an increase in income from 100 to 200. Now the difference between the two is saving का difference क्या हो जाएगा, 90 minus 30 you will get 60 here and 200 minus 100 you will get the income 100. So change को हमें खाली consider करना है, that is 60 upon 100. तो 60% आपका क्या आ जाएगा, marginal propensity to save. Okay, now with the help of this we can easily calculate here. इनकम आपका सेम रहेगा, 0, 100, 200 सो ऑन. सेविंग आपका सेम है. ना चेंज इन सेविंग, सेविंग में चेंज कितना आ रहा है, तो पहले में कुछ भी नहीं आया, 40 माइनस 20 या 20 आ जाएगा. देन यहाँ पे भी कुछ आपका ये 20 माइनस 0 देन 40 माइनस, तो ये 20 का चेंज हो गया. ना चेंज इन इनकम में कितना आ रहा है, 100 का चेंज आ रहा है, राइट? ना वी विल पुट द फॉर्मूला MPS इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. ओके, ना हियर व्हाट दे आर सेइंग, कितना चेंज हुआ. देखिए इनकम आपकी फॉर एग्जांपल इतनी थी और ये बढ़ के आपका इतना हो गया, तो देन चेंज आपका ये आ गया है, इनकम में इतना चेंज आ गया एंड देन दिस वन. ओके, तो आप डायग्राम ऐसे ही बस रफली बना सकते हैं. नाउ इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यानी कि एडिशनल इनकम, ओके, अगर हमारी एडिशनल इनकम जो भी है वो क्या हो गई है, पूरी की पूरी सेव हो गई है. ओके, एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का ही रिलेशन हमें खाली देखना है, दैट इज एन MPS. ओके, so if the entire additional income is saved, then change in consumption is equals to 0. Okay, then change क्या होगा आपका, 0 होगा, यानी कि आपका change in consumption, यानी कि change in consumption is equals to 0. then MPS can be equivalent to 1. For example, अगर मैं यहाँ पे example दूं कि MPS marginal propensity to save is equals to 1, तो suppose एक person की income increase करी आपकी, this one income increases to 1000. okay, and saving उसने सब सेव कर लिया. ओके, 1000, तो कंजम्पशन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. तो सेविंग कितनी थी आपकी, 1000 थी, और इनकम आपकी कितनी है, 1000. तो ये 1 आ गया. हेंस इट इज प्रूफ दैट MPS कैन बी 1 is equals to 1 if entire additional income is consumed. Now for example, आपका जो entire additional income है, यानी कि change in income is consumed, आपने सब consume कर लिया और आपने saving ही कुछ नहीं रखी, right? Now the second scenario is MPS is equals to 0. We know the formula, MPS is equals to change in saving upon change in income. Now for example, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, that is no part of additional income is saved, the entire income, increased income is spent on consumption. तो for example आपका change in saving आपके पास आया, यानी कि जो income आपकी change हुई वो 1000 हुई for example,
एंड आपने उसमें कंजम्पशन जितनी इनकम थी आपने सब उसको कंज्यूम कर लिया, सब स्पेंड कर लिया, ओके, और सेविंग आपने क्या करी, जीरो करी. सो हियर सेविंग इज जीरो अपॉन चेंज इन इनकम इज 1000. So it means, hence it is proved that is MPS can be zero. Okay. So now we can say that MPS varies between 0 and 1. Okay. Now here you have to just keep this in mind. MPS or MPC will always lie between 0 and 1. Okay. ये जरूर से याद रखिएगा. And APC and APS means average propensity to consume and average propensity to save will differ depending upon the different situations, scenarios, or multiple factors. Okay. So you can take the screenshot, because with the help of this you can easily remember, and you no need to turn the pages and diagrams, because I have made a slide in which everything is there. Important pointers are also here, and with the help of the table and diagram you can easily revise. Okay. And then last here, this one, that is the consumption function of propensity to consume. तो ये इस तरह बनेगा कर्व. मैंने एक सब आपको सिर्फ सिंपली बता दिया, ये पूछा जा सकता है. ओके. एंड दिस वन सेविंग फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ये इस तरह आप इसका कर्व बना सकते हैं. जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन. ओके. एंड after this, what we will do, the relationship between APS and APC, and relationship between MPC and MPS. Okay, and then afterwards we can start the investment function. Hope you like the video. Please do like, share, and subscribe. Thank you for watching.